अगर लाइफ में थोड़ा बेटर बनना है तो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई नो प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक में स्टार्ट कहाँ से करें। डोंट वरी, मैं हूँ ना। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर टॉप 5 सेल्फ हेल्प बुक्स जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। ये सिंपल है, इम्पैक्टफुल है एंड ये आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे, बट जो कि इवेंचुअली बहुत ही बड़ा चेंज होगा, विच इज़ ग्रेट। So without wasting any time, let's get started. So the first book I have is Atomic Habits by James Clear. This is my favorite book and this was my first self-help book. I totally love this book. This book talks about how you can change just 1% every day and it will make a huge improvement in your life. We should not underestimate the power of small habits. अटोमिक हैबिट्स बताता है कि आप अपने डेली रूटीन के छोटे इम्प्रूवमेंट से अपना लाइफ कैसे बदल सकते हो. सो वाई शुड यू रीड दिस? बिकॉज लैंग्वेज इज़ प्रिटी सिंपल. दिस बुक इज़ इम्पैक्टफुल. डेली रूटीन को फॉलो करना आसान हो जाता है. प्रैक्टिकल एडवाइस है और ये बुक बहुत ही अमेजिंग है. दिस बुक सेज you need to focus on system rather than goals to improve your life and your habits. So the next book I love to talk about is Ikigai. This book is based on Japanese philosophy and this book helps you to find reason for your living. ये book बताता है कि आपको purposeful रहना चाहिए and how to live stress free. Why should you read this book? Because this is short, ईजी टू रीड है एंड ये आपको लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन करके मीनिंगफुल चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने का एडवाइस देता है, जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है. आई नो मोस्ट ऑफ यू आर लाइक बनी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, कि आप दौड़ना चाहते हो, भागना चाहते हो, गिरना भी चाहते हो बट रुकना नहीं चाहते. बट एट द एंड बनी भी रुका था. सो आपको भी थोड़ा स्लो डाउन करके, थोड़ा रुक के अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज So the next book I absolutely love is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. This is an amazing book if you want to improve your communication skills or you want to upgrade your social life, then this book is just for you. This book talks about how you can build your network and how you can make people feel interested in you and you can make positive impact on people. So why should you read this? Because it definitely improves your communication and builds a leadership quality in you. I know that comes with experience, but it helps with some teachings that will definitely help in your leadership skill. Secondly, it helps in building networking, improving your professional life and communicating better with people and building a better relationship with them. So if you are an introvert and want to shift to being an extrovert, then this book is definitely a must read. The next book I want to talk about is Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki. This is an amazing book. This talks about money and how different perspective of money can help in making our mindset. So we all know that पैसे कमाना या पैसे को कैसे हैंडल करते ये हमें स्कूल नहीं सिखाती, बट दिस बुक टीचेस दैट. इट हैज़ पर्सपेक्टिव ऑफ two dads, a rich dad and a poor dad, and how they handle the money, how the mindset for money is different, and how they can make money work for them, and one is working for the money and second is making money work for them. So this is an absolute read for all those people who want to make money work for them. Why you should read this? Because this is a short read. This is in form of a story of a kid who explains the difference between the rich dad and the poor dad, and this is an amazing book. It teaches about the money mindset that schools ignore, so this is just amazing. So this book also talks about an asset and liability, so this book is just a must read for all those people who are trying to know more about finances and know more about money in general. So this is just great. So the last book I want to talk about is
The Psychology of Money by Morgan Housel. This is an amazing book on finance, and anyone who is looking to start something on finance, then this book is just for you. दिस बुक टॉक्स अबाउट कि पैसे कैसे कमाना है और पैसे को कैसे हैंडल करना है, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली भी कैसे उसको खर्च करना है. एंड दिस बुक ऑल्सो टॉक अबाउट कि सिर्फ पैसे कमाने नहीं होते, यू ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है. So why should you read this? Because it has 19 short stories with captivating example जो कि बहुत ही amazingly आपको finances के complex terms को समझाएंगी. ये finance को इतना easy और इतना effective बनाता है कि आपको पढ़ के भी बहुत अच्छा लगने वाला है. And if you feel that finance is boring subject and quite complex, this is just a book for you. So if you want to read something on money and finance, this is just perfect for you. You should definitely read this. So these are my 5 favorite self-help books that are just perfect and amazing for your self-help journey, and this is just beginner friendly. And if you have read any of these, then do let me know in the comments. और अगर आपको चाहिए कि मैं और सेल्फ हेल्प बुक recommend करूँ या फिर और सेल्फ हेल्प बुक के बारे में आपको बताऊँ, तो मेरे को कमेंट्स में बताओ आप. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन हिट दैट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब. बाय.